Welcome to the Startup Grind. So I'll just quickly summarize what PayU is. We like to think we are the #1 player in the e-commerce category. We are actually #1. We are about 5 or 6 times the size of CC Avenue, which is typically more popular. And we're #2 overall, which is we are right behind BillDesk. BillDesk is quite large because of its utility payments, bill payments, insurance payments. Yeah, that's about PayU. So मेरी advertising हो गई. Now we can kick off with whatever Nikhil wants. So Nitin, yeah, thanks for being with us. We generally start off by asking, about your childhood, about your school days, college days, how you got, started. Okay. So a little background around that. Okay, cool. So childhood, I remember very little of it. I started. So what I remember is Dehradun. I think I did my kindergarten and I was until class 3rd in Dehradun. From there we moved to Delhi, my dad did, and then I joined Hansraj Model School. I pretty much finished my schooling entirely in Hansraj Model School, which was till class 12th. As a kid, I was, what do you call it, a typical Maggu. That's how you can describe me. कोई स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था वही वाला मतलब टिपिकल यार. उसके बाद हैव यू गाइस हर्ड ऑफ विद्या मंदिर? तो 11th में विद्या मंदिर ज्वाइन कर लिया, भैया ने वहाँ पे पढ़ाया. यू डोंट माइंड मिक्सिंग हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? कूल. फिर गॉट इनटू IIT. My J rank was 46, so I got computer science in Delhi. 4 साल वहाँ बिताए. At the end of 4th year, there's a company called Capital One, which used to come to the campus and was the only one giving out placements in the US at that point in time. I'm talking about way back in 2003. Yeah, 2003. So they made me an offer. I was the only guy on my campus who got an offer from Capital One. It was a business analytics job. And then I also happened to clear IIM Ahmedabad. And I was the first guy in the computer science department so I set 2 records that year. That's in 2004. The first guy to reject Capital One, and the first guy from computer science department to go straight from my CS department to do an MBA from IIM Ahmedabad. Then it became more of a norm. Yeah, that's pretty much my schooling in a nutshell. Then I spent 2 years, wasted 2 years at Ahmedabad, and became a banker after that. Seriously, you wasted 2 years in Ahmedabad? Yeah. Yeah, exactly. देखो यार, फंडा ये है सिंपल सा कि IIT जाके आपको एक इंश्योरेंस डिग्री मिल जाती है. Whatever you may do in the future, if things become bad and you need a job, you can show that insurance degree and get a job. मैंने फालतू में दूसरी इंश्योरेंस डिग्री ली. IIM भी एक इंश्योरेंस ही है. If things become bad, you can easily get a job. So that's why I said I wasted 2 years. कुछ और करता तो थोड़ा और better होता. The good thing about IIM was it gave me a perspective about non-engineering things. So for example, I know how much HR matters or how important are people, what is the importance with things like people, which you do not appreciate until you come in real life and have some background to it. And second, it gives you that launching ground. So for example, if I ended up at Lehman and made some money there, then that was primarily because of Ahmedabad. Otherwise, it was a total waste. Okay, so tell us about Lehman. You were exactly doing the same kind of thing, yeah. Right? Lehman, I'm kind of very, yeah. So when I joined Lehman in London, so we go around different desks, and the desk that was making a lot of money at that point in time was asset-backed securities. What the desk used to do was take assets like mortgages, home loans type, और उसको कई सारे loans default करते हैं. कोई भी आप loan pool लोगे, वो loans default करते हैं. Home loan कम default करते हैं, unsecured loans ज़्यादा default करते हैं. तो हमारा काम ये होता था उन लोन्स को, कोई भी एक एसेट लिया, इंश्योरेंस, कोई भी एक एसेट क्लास ले ली जिसमें कहीं से पेमेंट्स आ रही रेगुलरली, उसको इकट्ठा किया और उसमें से बॉन्ड्स निकाल दिए, AAA, AA रेटेड बॉन्ड्स. एंड यू वुड गो अप टू लाइक एनीथिंग फ्रॉम 85% टू 99% वुड बी बॉन्ड्स, और बाकी से इक्विटी निकालते थे और ये बॉन्ड्स आप बेच देते थे. सो व्हाइल ऑन अ लोन ओवरऑल आपका प्रीमियम you would be getting paid this much. On a bond you would pay out to the bondholders this much, and that would become your premium. तो एसेट बैक सिक्योरिटीज वो करता था. बहुत ही रेयरिंग बिजनेस था, रोरिंग बिजनेस था लीमन के लिए लंदन में. लीमन वाज द #1 प्लेयर.
और उस डेस्क पे ज़्यादा पैसा बनता था. So I joined that desk. And my claim to fame is that I securitized the most toxic deal in the history of UK. So we took a pool of re-performing credit card loans. तो वो credit card loans जो default कर चुके हैं उसका pool लिया, उसको इकट्ठा किया, securitize किया और उसमें से AAA tranche निकाली. AAA rated both by S&P and Moody's. And I was the guy who was doing that entire structuring. The credit card loan which had defaulted. हाँ, वो किया फिर इतने टाइम में 7 साल हो गया था. And then I wanted to move back to India. मेरा प्लान था इंडिया वापस आने का. सो आई टोल्ड माई बॉस एंड वी फिगर आउट समथिंग सो दैट आई मूव फ्रॉम ABS टू फिक्स्ड इनकम रेट्स एंड फिक्स्ड इनकम सेल्स एंड स्ट्रक्चरिंग. और उसके पार्ट में आई हैड टू कम टू इंडिया एंड सेट अप अ डेस्क फॉर देम इन इंडिया. तो देन आई डिड दैट. सो आई मूव टू इंडिया इन मुंबई, hired a lot of IITians, got them to do a lot of structuring work, and then Lehman went belly up. और सैड पार्ट ये है, आई नेवर एक्सपेक्टेड Lehman टू गो belly up. मतलब मेरा बॉस अपने भाई को लीमन में लेके आया था महीना पहले. न्यू MDs had joined my desk a month ago, not the ABS desk but the rates desk. तो हमें लग नहीं रहा था कहीं से भी लीमन बैंकक्रप्ट जाएगा. और हमें पता लीमन was too big to fail. इनफैक्ट इतना हमें लगता था कि वो बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता दैट आई पुट ऑल माई सेविंग्स इनटू बाइंग लीमन स्टॉक. लीमन स्टॉक एक बार $70 का था, वो 40 आया, मैंने 40 से बाय करना शुरू किया था, 18 पे और बाय किया, $2 पे मैंने सारी सेविंग्स डाल दी. मैं कहीं से लीमन बैंकक्रप्ट नहीं जा सकता. And the good part was that year I was on a guaranteed bonus. अगर चला भी गया, बैंकक्रप्ट नहीं होगा, $0 पे खरीदेगा जैसे बेस्टन्स को खरीदा था, तो मेरा गारंटीड बोनस तो आएगा, मैं वहाँ से पैसे बना लूँगा. So either way, I'll make a lot of money. साला बैंकक्रप्ट हो गया. I still remember ये सब काम मैंने पिछले हफ्ते किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को. वीकेंड छुट्टी थी. मंडे मॉर्निंग में उठा सुबह 7 बजे. माई फ्रेंड वॉज इन सिंगापुर. He calls me up from there. Nitin, do you know Lehman just filed for bankruptcy over the weekend? मैं क्या बात कर रहा है? मजाक मत कर. तो नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ. ऑफिस का तो मैं चला सच है. उस दिन काफ़ी बुरा लगा था. I lost several $100,000 that day, and I was only 25. तो 25 साल की उम्र में अच्छा नहीं लगता when you lose that kind of money. और ज़्यादा बुरा मुझे ये इसलिए लग रहा था कि मैं जब बॉम्बे में रह रहा था तो मेरी जो आई टुक ए हाउस ऑन रेंट, और जो मेरी पार्किंग थी ना वो छोटी थी. तो मैं सोचा था सिविक खरीदने की. मैंने सिविक इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि सिविक आ नहीं रही थी, तो मैं स्विफ्ट खरीदी. सारा पैसा चला गया. मैं कहा कम से कम सिविक तो रहे थे अगर मैं सिविक खरीदी होती. एनीवे, तो उस रात काफ़ी बुरा लगा. दारू भी पी. मेरे लैंडलॉर्ड का भी फ़ोन आया. मैंने लैंडलॉर्ड का कहा डिपॉजिट वापस कर दोगे? उसने कहा हाँ कर दूंगा. So that was how Lehman went bankrupt. So did you at that time sort of left Lehman, और Lehman ने कहा कि अब तो दुकान बंद है, अब अपना? नहीं, 2-3 अच्छी चीज़ें थी. So क्या अच्छी चीज़ें थी? मेरी जो स्टार्टअप थी खोज गुरु, आई फाउंडेड वे बैक इन 2006. तो जब मैं IIM अहमदाबाद से ख़त्म किया तो मार्च में कोर्स ख़त्म हो जाता है और ज्वाइनिंग मेरी इधर जुलाई में थी. 3 महीने का गैप था. तो पहले मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन की जिसिल करके गुड़गांव में. मैंने कहा यार किसी और के लिए काम करके क्या फ़ायदा, लेट मी डू माई ओन स्टार्टअप. तो खोज गुरु वॉज बॉर्न विद द इंटेंट ऑफ लोकल सर्च, एंड वी एक्चुअली हिट रेवेन्यूज़ इन मंथ 2. तो वो स्टार्ट किया मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ. 1 साल तो फिर मैं लीमन चला गया. 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, देन आई थॉट लेट्स डू इट इन ए बिगर वे. So one of my friends came and joined Khoj Guru full time, and I'll start funding Khoj Guru. तो मैं तो पाउंड में कमा रहा था, फंड करना बड़ा आसान था. So we got another friend in and started putting in, I don't remember at that point in time, I think 1.5 या 2 लाख रुपए महीना में Khoj Guru में डालने लगा, which funded lot of salaries and Khoj Guru. When Lehman went bankrupt, so Khoj Guru had been sincerely around for a year. Local search ही करा था वो. It was burning like I don't remember at that point, but it was burning about 2 lakhs a month. जो भी मैं डाल रहा था burn हो रहा था. Second चीज़, while I was in India, I was a London employee. London assets were taken over by Nomura, or Indian assets were also taken by Nomura. So I could manage an offer that way from Nomura, but it was a local Indian offer. तो बंदा पाउंड में कमा रहा और गारंटीड बोनस में बैठा, उसको इंडियन ऑफर अच्छी कैसे लगेगी. तो वो 2 चीज़ें हुई which were not bad things, but then I thought no point continuing with Nomura anymore. प्लस बैंकिंग में रहना नहीं था, बॉम्बे में रहना था, दिल्ली वापस आना था. तो मैं दिल्ली वापस आ गया. सेड लेट मी गेट इनटू खोज गुरु फुल टाइम. सो दैट्स व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट. So tell us about the background of Khoj Guru. जब when you started, how did it came about? I don't think उस टाइम इस टाइप का फंडा भी होता था. 2006 में जब मैं जिसिल में था, so I tried to stay in Gurgaon for the startup,
I realized it was just a pain to find local stuff. Just Dial था popular नहीं था. So I said local search makes sense and we set up a local search engine. I still remember जब मैं setup किया था तो InMobi का founder नवीन उस वक्त he had the same plan. So we met and we thought, you know, can Khojru work with Naveen at that point in time. His startup was not called InMobi then. It was called what other name was that previously? So Naveen Tiwari also tried local search for a year or 6-7 months before he switched it around to mobile advertising. तो खोजरू वहाँ से पैदा हुआ था. जब मैं वापस आया 2008 में when Lehman had gone bankrupt, अक्टूबर में वापस आया तो मैं कहा 2 लाख रुपए बर्न हो रहे हैं, लोकल सर्च कहीं जाना नहीं है. Just Dial has taken the game away and you know there was another player called Ask Lela which had received funding from Lightspeed and you know it seemed ahead of the game. और तब पैसे तो थे नहीं तो had to turn around the model, had to figure out revenues. तो हमने कहा कि चलो figure out करते हैं पैसे कैसे बनेंगे. तो खोजरू went about that figuring out stage कि उसे क्या करना है to make revenues and get to break even over that 1.5 year period. So October to January. अक्टूबर 2008 में हमने शुरू किया था. Finally figured out what we have to do by late 2009 and by January 2010 we achieved break even, which was a huge milestone for us. तो we thought we are doing local search but local search में हम win नहीं कर रहे हैं. So we thought what does people want? We thought people want to know about deals. तो हमने next चीज़ जो start की वो थी we started aggregating lot of deals. भाई जहाँ पे भी सेल चल रही है ऑफलाइन लोकेशन में कोई डील चल रही है उसको एग्रीगेट करने का हमने डिसाइड किया. सो आई स्टिल रिमेंबर एवरी डे सो आई स्टार्टेड टचिंग ऑल द ब्रांड्स व्हिच आर आउट देयर जिनके भी ऑफलाइन आउटलेट्स थे. आई सेड कि आप ही मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो एंड आई वुड यू नो मेक लाइक 150 फोन कॉल्स अ डे चेजिंग एनीबडी एनीवेयर हु वाज रिलेटेड टू एनी ब्रांड टू गेट दैट सेल इन्फॉर्मेशन. आई स्टिल रिमेंबर 1.5 महीने बाद मेरे को विल्स लाइफस्टाइल से फ़ोन आया या जॉन प्लेयर्स में ध्यान नहीं, दोनों ITC के ब्रांड्स हैं, कि वहाँ के ब्रांड मैनेजर ने फ़ोन किया कि आके ना आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले लो. वो पागल ही हो गया खुशी के मारे. एंड आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द ऑफिस. तब मेरे पास एक ड्राइवर था वो जैम में फंस गया. मैं कहा तो तू रुक तो आराम से आ. एंड आई रैन टू देयर ऑफिस विच वॉज अबाउट 1 किलोमीटर क्योंकि उसने 6:30 बजे मीटिंग का टाइम दिया था. फिर जब सेल्स की एग्रीगेशन शुरू की तो हमें ज़्यादा अपटिक नहीं मिला. वी कुडंट स्पेंड सो मच इन मार्केटिंग तो वो पॉसिबल नहीं था. फिर ना एक छोटा सा अनदर कूपन कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर होता है उस वक्त कि लोग कूपन बुकलेट बेचते थे. रेस्टोरेंट के कूपन बना के एक ही रेस्टोरेंट के या मल्टीपल जगहों के कूपन बना के बेचते थे. आई थॉट वी कैन ऑल्सो डू दैट. तो हम वेस्टगेट मॉल गए. तो आई यूज्ड टू लिव एट दैट पॉइंट टाइम इन पितमपुरा. वहाँ पे वेस्टगेट मॉल है विच इज़ अबाउट 8-10 किलोमीटर्स अवे. और वहाँ पे जितने भी आउटलेट्स थे ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स से कूपन लेके आए. डोमिनोज से कूपन लेके आए, पिज़्ज़ा से कूपन लेके आए, बहुत लोगों से कूपन लेके आए और 99 रुपीज़ की कूपन बुकलेट बना दी. अब उसको बेचना था तो खुद ही वेस्टगेट मॉल के सामने इट्स नाउ द टाइम पीरियड अराउंड मार्च अप्रैल एक स्टैंडी लगाई. वेस्टगेट मॉल मुझे याद है दे चार्ज अस आई थिंक दे स्टार्टेड चार्जिंग विद 15,000 रुपीज़ अ मंथ एंड केम डाउन टू 7,000 रुपीज़ अ मंथ. तो उतने में हमें बस वो बाहर एक स्टैंडी मिल रही थी, मतलब बाहर स्टैंडी लगा के बाहर जगह खड़े होने की जगह मिल रही थी. तो मैं खुद खड़ा होता था. आई वुड स्टॉप एवरीबडी हु वुड एंटर द मॉल एंड ट्राई टू सेल द कूपन बुकलेट. आई स्टिल रिमेंबर स्टार्टिंग में 18 लोगों में एक बंदा खरीदता था और बाद में दैट केम डाउन टू 12 लोगों में एक बंदा वो कूपन बुकलेट खरीदता था. 18 लोगों को चलते हुए लोगों को आप रोकते थे, सेल्स पिच मारते थे. कोई लोग आपको बिल्कुल जैसे आपको फ़ोन आते हैं ना वैसे ही करके चले आते थे. एंड दिस इज अ गाय हु वाज अर्निंग सेवरल क्रोर्स टिल 3 months बिफोर दैट और 6 months बिफोर दैट. बट 18 और मैं दिन में कुछ 10 से 15 कूपन बुकलेट बेच पाता था. You know, I did that for roughly 15-20 days before I started hiring people to do that for me. And at one point in time, we scaled that business model to a point where we were doing about 5,000-6,000 rupees in coupon booklet sales every day. उसको ज़्यादा स्केल करने की कोशिश की पर उस पॉइंट से ज़्यादा स्केल हो नहीं पाया. We tried different models but we couldn't see scale. At the same time, हमने वेबसाइट पे ना ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी. You know, there were a lot of online e-commerce was just kind of taking off. तो हमने इनकी coupons लाने लगे and we started putting that on the website and we started charging per coupon redemption. And that model started taking off for us. मुझे याद है कि Goibibo was one of our first partners और Goibibo के हम ₹200 ऑफ के कूपन बांटते थे और हमें हर कूपन रिडेम्पशन पे 100 या 150 रुपये मिलते थे. एंड वी वेंट क्रेजी अबाउट इट. मतलब एक दिन ऐसा था कि Goibibo से फ़ोन आया या कि तूने फ्लैट बुक करा लिया है क्या, क्योंकि Goibibo ने उस दिन शायद कुछ 150 सेल की जिसमें से 140 सेल खोजरू ने सेल जनरेट की थी. दैट्स सम अमेजिंग नंबर्स. सो Goibibo के इनिशियल डेज में जो कूपन की वो पूरी थी वो वी वुड लीड दैट. And we got coupons from several places, चाहे वो Myntra था, चाहे वो Flipkart था, everybody we got coupons from. And we had coupons for everybody and we would just market. We became and we leveraged email marketing like crazy. What we used to do was, उसकी cost of acquisition 400 रुपये है
मैं 10 कूपन एक ईमेल में बेच रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 रुपये है एंड वी वुड मेक द मार्जिन, मतलब कूपन भी देते थे उसमें, बाकी हम कमाते थे. एंड दैट मॉडल किक्ड ऑफ रियली वेल. सो बाय एंड ऑफ 2009, early 2010, we kind of broke even our business with our revenues touching about 3 lakhs or 4 lakhs a month. And over 2010, by the end of it, we had touched about almost 10 lakhs of revenue a month from just this business model. Break even एक बहुत important point था, क्योंकि उससे पहले सारा पैसा मेरा था या मेरी फैमिली फ्रेंड्स का था, और हमें दिखता था यार ये 3 महीने में खत्म हो जाएगा पैसा या 6 महीने पैसा खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू मेक दिस ऑफलाइन मॉडल ऑल्सो हैपन. तो एक बार ब्रेक इवन अचीव हो गया और फिर पॉजिटिव रेवेन्यूज आ गए, लाइफ थोड़ी कूल हो गई थी. दैट्स व्हाट हैपेंड विद कोचबिरो. But you never went for a funding or anything. It was नहीं, always- कोशिश की ना. पहले तो सिंपल सी बात थी, बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था, सो वी हैड टू फिगर आउट द बिजनेस मॉडल. वी वेंट थ्रू दोस एक्सपेरिमेंट्स. मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं की, बट वी वेंट अबाउट 6 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू फिगर आउट दिस इज व्हाट विल वर्क. व्हेन दे स्टार्टेड टू वर्क, nothing had enough scale. So we had to find something which could tomorrow become a $20 million company. So we were always engaging with VCs to find that thing which will scale. But वो point मिला नहीं exactly. तो इसलिए while VCs were interested and we had first level, second level and third level talks, उस point तक पहुँचे नहीं कि investment crack हो. और फिर खोजगुरु पॉजिटिव था, तो मैं लगा था कि हम अपने फंड अक्रूवल से ही इसको ग्रो करते जाएंगे. उस वक्त ग्रुपॉन का मॉडल बड़ा पॉपुलर हुआ, and we cautiously felt that it's a bad model to invest in. Everybody wanted us to do Groupon, and we said we'll not do Groupon. We stayed away from it. That was a good decision at that point in time. तो उस तरह से those were the thought process. Even Snapdeal पहले उसी मॉडल पे आया and then it's kind of pivoted and it's So everybody pivoted. See, Groupon needs certain things in place. It needs a large e-commerce buying community, large online buying community, and it needs Groupon देखो traditionally model survive नहीं किया. वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए, इसमें वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रही थी. एग्जैक्ट वैल्यू डिस्ट्रक्शन नहीं थी. ग्रुपॉन मॉडल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, पर उसमें एक दो चीज़ें कमी थी, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव. इंडिया में डील हंटर ज़्यादा हैं, तो यूज़र रिपीट नहीं दिखा रहे थे, तो इट डिडंट टेक ऑफ दैट वे. सो ग्रुपॉन इज अ कस्टमर फॉर पेयू, इट डज वेरी वेल. So they have figured out what is it that will work in India, but purely restaurant based deals जो इस core concept से शुरू हुआ था वो didn't take off. और नॉन रेस्टोरेंट वाली चीज़ें इंडिया में तब पॉपुलर नहीं थी, मतलब कितने लोग स्पा करते हैं. While in US people tried variety of services, in India it was all about restaurant when it came to services. So that was the reason we stayed away from the Groupon kind of model. So did you you came out of Khojguru? Are you still part of Khojguru? Khojguru में I think I still own equity. It was a kind of a painful exit. एक मैंने जो गलती रियलाइज़ की वो ये की कि जब दोस्तों के साथ करते हो तो यू बिकम वेरी सब कुछ बराबर है, जबकि लाइफ बराबर नहीं होती है. सो लेट्स से द वैल्यू वी ब्रॉट टू द टेबल एंड आवर फेयर मार्केट वैल्यू वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. जब की तब का सब बराबर है, भाई सारे ने इक्विटी इक्वल बांट ली. ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड 2 यू रियलाइज दैट यू आर ब्रिंगिंग डिफरेंट वैल्यू टू द टेबल. You also realize that you can have a different market compensation than some of your other founders, and you want to be equitable to that, क्योंकि वो लाइफ की रियलिटी है. और जब आप उस टॉपिक को अप्रोच करते हो तो फाउंडर्स में फाइट हो जाती है. That's what kind of happened to us. फाउंडर्स में फाइट हो गई, things became ugly, and it should have been dealt with more maturity both by me and by the other co-founders. और दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा immaturity थी. और at the end of the day, I'm quite happy that I left it because it was overall a good learning lesson, and B, I couldn't have scaled if I stayed with those co-founders. So how did PayU happen? PayU just बड़ा आसान था. So we used to do a lot of transactions for GoIbibo and Traders, which was Naspers, and we were trying to raise money, so we had pitched to Naspers as well, to Ashish. So I knew Ashish. जब मैं खोजगुरु से बाहर निकला, then I joined Adobe, and मतलब Adobe had its own challenges, corporate had its own challenges. मतलब very difficult for an entrepreneur to have fun there. तो वहाँ पे घुस के मैंने रियलाइज कर लिया तो गड़बड़ी कर दी. So I thought I'll leave, and I told my manager. उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और स्पेंड कर टाइप चीज़ें, तो किया, but it was not making sense. And in the meantime, I started figuring out what's the next thing to do where I can run a business. So I approached Ashish. Ashish knew me, and it was a great meeting. Ashish said, "बता क्या चलाएगा?" It was kind of a fit. He needed entrepreneurs. I was an entrepreneur, and he offered me that kind of a break, if I would say. And he said, "ये 3-4 ऑप्शन से क्या चलाएगा?" I thought hard about it, and I thought payments में $1 billion company बन सकती है, and I started to do payments. That's how Naspers happened, and that's how it happened with Ibibo. So Naspers is actually the parent company for For Ibibo. Ibibo, but now the thing is completely different. So earlier
the payment asset was associated with completely with the Ibibo group. But last year in October, Naspers separated all the payment assets from the e-commerce assets. और सारे payment assets globally इकट्ठा करके they put it as PayU, one PayU asset, and it's headed by a PayU global CEO, who in turn reports into the Naspers CEO. And each e-commerce asset has a different reporting line. So we are completely separated now. Earlier there was some shared resources, so we would share some resources like HR and admin, but now there is complete separation between the companies. There are different reporting structure, different equity structure, different ownership structure. Does that help because you can share knowledge and stuff? So there isn't much knowledge to share that way. They are our customers, and that's what we, I mean, they're good customers. You know, if you look at Redbus or Traders or Goibibo, they rank in top 10. At least Goibibo and Redbus rank in top 10 e-commerce companies of the country. So it's good to have such customers. That's the advantage. Initial days when you're starting off, you need things like admin and HR and finance to be taken care of. So that way, Ibibo Group acted as a great incubator because it gave us that support. But at this point where we are 300 plus employees, we are fairly large. We are, you know, as I said, 5-6 times the size of CCI. We are fairly large. So at this point in time, we have every function of our own. So we don't need that particular support. So, isn't the payment industry kind of crowded at the moment? Because it's getting crowded because everybody thinks there could be $1 billion company. But if you think about it, if you think about transactions, you first saw $1 billion company in the field of classifieds, whether it was kind of Craigslist in the US or Yelp in the US or it's Naukri or Just Dial here. Classified sales में पहले $1 billion company बनती है. The next thing where transaction happen is travel. So you see a Priceline or you see a Make My Trip here and you see $1 billion company there. When people start buying travel online, they want to buy more stuff. That's when e-commerce takes off. Look at Amazon in US or Rakuten in Japan or a Flipkart in India. When this happens, people want to do more payments and they want more trust. They want to do more things. That's when payments take off. Look at a PayPal in US or Alipay in China, or now there will be $1 billion payments company. Everybody knows that. In India, there will be $1 billion payments company. Question is, who will be that player? That's why everybody is entering into it. Question is, who will win? We are way ahead of the curve. We have the best products in the market. There is both the B2B side of the game and the consumer side of the game. In the consumer side of the game, nobody knows what will work. What worked in China, what worked in US will not work in India. So people are figuring out what will work there. On the B2B side of things, things are well known and we have huge lead there. So everybody is trying to become that $1 billion company. That's why so many players are entering. No, I was just saying, but the market is so regulated that it's not easy to crack. I mean, do you feel in terms of, you know, if you just look at the retail clients, there's tendency to not use credit cards or, you know, these medium, rather, I think people prefer cash. So cash. Not really true. So I'll share some numbers. There are 200 million plus people who are online, who access internet. There are about 340 million people who have a bank account. People who would buy from IRCTC in a given year will be about 20 odd million. People who would regularly do e-commerce in a typical month will be about 5 or 6 million. People who would do that in a year will be about 10 million. So, लोग IRCTC पे खरीदते हैं, पर e-commerce नहीं करेंगे. वो trust का gap है. और online buying के अंदर अभी भी लोगों का वो comfort नहीं आया. You're right. The bridge is that of trust, comfort, but that changes over time. That increases over time. We are where I think where China was 5 years ago, 6 years ago. We are about to see that inflection point, entering that inflection point. So tell us about your product, PayU Money. How does that work? So PayU Money solves two important problems. पहला करीबन 1.5 साल पहले, 1.5 years ago, we realized that when a merchant goes live with PayU or with any payment gateway, he needs to have a website. When he gets a payment gateway, he has to do a lot of paperwork. Then he has to pay to a developer to integrate that payment gateway with the website. So there is a minimum cost of 50,000 rupees for any merchant to collect payments online. And that was the reason that fewer than 10,000 merchants were collecting payments online. We said, can we bring this 50,000 down to zero? So PayU Money is on the premises that there is a seller who is running his primarily business offline. He wants to collect payments online for a specific purpose and he doesn't want to make this investment. How can we help him? Can he go live without a website? Can he go live without doing that tons of paperwork? Can he go live without paying any setup fees? And can he go live within hours? That's what PayU Money solves. And because of that, PayU Money today has reached a point where it has 30,000 plus activated merchants. Which is, these merchants wouldn't have existed if PayU Money as a product didn't exist. So you can basically set up your shop and you've got everything. We offer a lot of free tools like an email invoice, like a free web store, like a free web front. So whether it's a school who wants to collect fees or I'll just take a few examples. खाना भेजते हैं, lunch भेजते हैं और billing करनी होती है महीने के end पे.
These guys, they just set up a web front or send an email invoice to collect those payments. You think of any use case, मतलब कोई trainer है, कोई workshop run करता है, कोई कुछ करता है. They are largely offline events, but to collect the payments easily, they need some tools. They don't necessarily need a website, but they need those tools. So we give those tools free of cost, and we charge them for a successful transaction. It's a beautiful model. We think about Square. What did Square do? Square gave that free dongle, which you could plug into your phone and swipe that card, right? They gave a free tool. They educate the customer how to do that. We're doing the same things. We're giving a lot of free tools and educating the customer how to collect payments online. There are enough people who want to pay them and would prefer to pay their card or not travel that 5 kilometers to make that payment happen. That's what we solve from a seller point of view, from a small merchant point of view. From a buyer point of view, we solve problems like this trust deficit. So if you're paying through PayUmoney, whether it's on BookMyShow or on a small website, right? Our simple thing is, you'll either get your product or service or you'll get your money back. We give buyer protection. Guarantee हमारी है. आज आपकी कुछ गड़बड़ी हो आती है, आप बैंक को फोन करते हो, मर्चेंट के पीछे भागते हो, होता है नहीं होता पता नहीं. इसमें गारंटी हमारी हो गई. या तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगी जो बताई गई है, या पैसे वापस मिलेंगे. So bridging the trust deficit. And then there are other advantages. The advantage of being able to store your card data. So today, I'll not go into specific numbers. 50% of the users who do a card transaction on PayUmoney end up storing their card data. That's the kind of statistics we are seeing. Then we offer rewards, discounts, cashbacks, reward points, etc. So there are lot of advantages if you use PayUmoney as a payment option. There are a lot of things I'm not talking about today, but I'll reveal that in 3 months' time as we strategically move forward. So it was initially called PayUpesa. So this was it was called PayUpesa. So this was earlier for Indian market, and then you kind of planned to. Yes, you can say that. PayUmoney is just a more cooler word we thought. Okay, so that can be expanded to other markets. To other markets easily. Yes. Okay. So tell us about what sort of challenges you faced when you were setting up PayU. यार इंडियन मार्केट में बड़ी रेगुलेटेड मार्केट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है व्हेन यू आर गोइंग आफ्टर स्टार्टअप ही वांट्स एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट or let's say for a very reasonable price. So when we started up, we just could process credit card and debit cards. We couldn't process net banking, and net banking relationship getting them takes a lot of time. The first challenge was how to counter CCAvenue while with not having net banking payment options. So we found a partner with whom we could do a wrapping around, and they would settle net banking funds. The only thing we went after CCAvenue was quality of products, so higher conversion rates and a better quality of service. अब वो गेम खेलना till the point we reach where we have enough net banking options for the first 1.5 years of our operations was a tough thing. And we also tried wrapping around CCAvenue. So if a customer had payment options which we were not giving, let's say we at that point in time had 5 or 6 net banking and CCAvenue offered 40. So we said we'll wrap around CCAvenue. And CCAvenue didn't like that. So one day they decided if you're not coming from the URL which is given to the merchant, and if by any chance that's a PayU URL, they were blocking it. And we would, when that happened, we during the night figure out how we could do a redirect from a merchant's page to get to CCAvenue. So we played this cat and mouse game with CCAvenue for about a year, where countering this net banking payment option availability, where we didn't have enough, so we would wrap around other partners and would get around it. Now we have enough, so we are okay, we are way ahead of CCAvenue, but that's the game we played for the first 1.5 years. And then when we were launching the product, we focused just on conversion rates, which was great. But then every other thing like billing and settlement, it was not automated, which some of the customers were used to. So we would stay up all night, make those settlement reports. My team would do that, and we would email it individually. So we went through a lot of pain in setting this entire thing up, making sure that the customer felt that everything is great and automated in front of him, whereas we were managing a lot of things manually at the back end. But that was the first 1.5 years. And now everything is hunky-dory, cool, awesome. So, but the first 1.5 years was a lot of fight that way. So, what sort of help was available from Naspers Group? Were they? See, Naspers. You have to think about it. We had this support of admin and finance and HR, the functions like that, tech ops. But everything else we set up from scratch. So if you wanted to hire someone, yeah, go hire. But finding the right people, attracting the talent had its own challenges. If we had to solve a problem, we had to build it. They would give us the resources. So money was not the problem. But we never spent enough, or we didn't spend too much of it. We were always careful. So Naspers would support you from a point of resources.
and it supported us from a point of giving us these shared functions, support functions like admin and HR. But everything else, the business we had to, we kind of created from scratch. And eventually then you also And then the biggest advantage of Naspers were two actually. Naspers is a $45 billion company. So, you know, as a startup in a payments company where the bank wants credibility, it would lend us credibility. Second, having Goibibo as a merchant who was doing some decent volumes, you would get entry into banks. So that helped us in the first 1.5 years of operations. But then now we have enough scale for, we're quite big that way. So what's the future like? Future is PayU India will become a $1 billion company. Hopefully in the next tops 3 years. No, it will. It will. There is no doubt about it. In payments, there will be a $1 billion company. We are extremely well positioned. We have 30,000 plus merchants. Nobody can claim such kind of merchants in the online space. We are the #1 player in the e-commerce category. We are the #2 player in the non-e-commerce category. We are the #1 player in this long tail category. In the wallet category, our product is far more mature than any of our competition. The kind of things we can do now because of our market size is huge. Investment is not a problem. So we can put any kind of money into the game. We'll just match whatever. I mean, we have no dearth of funds. I mean, it's not a problem. So we are extremely well positioned to be that $1 billion company. So, you know, besides the typical retail market, which is the urban population, are you also looking at some innovative solutions, you know, trying to get into rural PayU Money is all about innovation. No, we are not targeting that market. Our TG is very clearly people who have smartphones, who have money to spend, who like paying online. And our problem is how we bridge the trust deficit. 10 million people buying in a year is too less online. This is excluding COD. How do I take the 10 to 50 million? The entire industry grows. And today I have more than 50% market share in e-commerce. तो वो लोग जाके कहीं ना कहीं मेरे merchant पे खरीदेंगे. मतलब यहाँ पे PayU use हो रहा है. तो PayU will also grow. So that's our problem to solve. How do we get more people to buy online by bridging that trust deficit? You're not looking at something like PayPal or PayU Money is PayPal if you think about it. Consumer wallet बना रहा है. उसमें stored value नहीं है. देखो जो PayPal का proposition US में काम किया वो इंडिया में नहीं चलेगा. So you have to think about the problem differently. That's important. So I'll just ask few general questions. You know, you mentioned you had some tussle between your co-founders. We generally, you know, I think one problem which everyone comes to us, you know, is first is finding a co-founder, and then you know how do you maintain that sort of relationship? अच्छा बंदा होना चाहिए यार. देखो अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं. तो अगर को-फाउंडर में बहुत ईगो है, अगर वो ईगो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही तोड़ू आदमी है तो वो सही जा सकती है. पर ईगो इसलिए है, पर अगर ईगो है और वो एवरेज थॉट प्रोसेस है तो वो को-फाउंडर नहीं होना चाहिए. सिंपल सा फंडा ये है. हर कोई अच्छा होता है, हर कोई मेहनती होता है, हर कोई अच्छा करना चाहता है. दे वांट द स्टार्टअप टू बी सक्सेस. A startup starts failing when poor decisions are taken, when prioritization is bad. Poor decisions and prioritization is function of ego. अगर बंदा गजब का तोड़ू इंसान है, बहुत ही तोड़ू प्रायोरिटाइजेशन करता है, बहुत ही तोड़ू आइडियाज़ निकालता है, बहुत ही तोड़ू तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और ईगो है तो सही जा सकती है. पर वो अगर अच्छी नहीं है तो फिर फाइट हो जाती है, स्टार्टअप्स फेल कर जाती हैं. और दो लोगों की ऐसी ईगो है और एक बंदे को लगता है मैं जहाँ सही हूँ, दूसरे लगता है मैं जहाँ सही हूँ, तो और फाइट हो जाती है. तो कुछ कर नहीं सकते. मतलब अगर आपके पास एक ऐसा को फाउंडर है जिसकी ईगो बहुत हाई है और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एवरेज है, वो रिजल्ट से पता चल जाती है एज यू गो फॉरवर्ड, तो उसको फाउंडर को छोड़ देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, या खुद उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए. बिकॉज दैट कंपनी विल नॉट ग्रो टू द स्केल एज यू वांट टू. सिंपल सी बात है. फिर भी सेम प्रॉब्लम आएगी यार. भाई इक्वल इक्विटी देखो यार, बंदे को ये समझना चाहिए इज देयर ए हायरार्की इन प्लेस. भाई इक्विटी आपने अनइक्वल कर लिया, आपने 60 ले ली, उसने 40 ले ली, पर अगर वो आपको अपना इक्वल समझता है तब क्या करोगे? 90-10 कर लो. जब तक हायरार्की प्लेस में नहीं है तब तक काम नहीं करेगा. वो हायरार्की प्लेस में होना जरूरी है और लोगों को अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. लीड लेना जरूरी है. यार राइट पर्सन कहना बड़ा मुश्किल होता है. सबकी ईगो बीच में आती है, मेरा डिसीजन सही है, तो वही चीज है जो चीज को खत्म करती है एक से ज्यादा को फाउंडर के केस में. वो कहते हैं ना, एक सेइंग है, लेट्स टेक इट, इफ यू हैव डेटा लेट्स लुक एट डेटा टू टेक अ डिसीजन, इफ यू डोंट हैव डेटा लेट्स गो विद माय गट फील. So what do you think of the startup scene in India? कैसे जवाब सवाल पूछ रहा है. अच्छा है और क्या है.
वे बैक 5 years ago मतलब पैसे लेने मुश्किल थे, आज तो एंजल है, बहुत चीज़ें हैं, पीपल आर डाइंग टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। पर अगर B2B SaaS कर रहे हो तो इंडिया को मार्केट मत बनाओ, ग्लोबल मार्केट की तरफ देखो। इट्स वेरी इजी टू डू, मतलब जितना एफर्ट इंडिया में लगेगा टू गेट टू $10 million इन रेवेन्यूज, उतने एफर्ट में इफ यू गोइंग आफ्टर ए मार्केट विच इज वेस्ट US कैन क्रिएट $100 million इन रेवेन्यूज। तो अगर आप B2B SaaS टाइप्स कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ इंडिया मार्केट पे फोकस कम डालो और बाहर की मार्केट से फोकस ज़्यादा डालो। ई-कॉमर्स में शुड यू पुट योर मनी इन ई-कॉमर्स नाउ? हाँ, निश कैटेगरीज हैं भाई, कई सारी हैं भाई। फ्लिपकार्ट ने, स्नैपडील ने क्या अच्छा काम किया है। दे हैव एजुकेट पीपल एंड एनकरेज देम टू बाय ऑनलाइन। सो दे आर सर्टेन, ये सब कुछ तो बेच नहीं सकते, उस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो कुछ निश चीज़ें हैं जिनमें आप तोड़ मचा सकते हो और वो कंटिन्यूसली तोड़ मचती जाएगी। तो US में भी तो यही हो रहा है, वो चीज़ इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। अच्छी तरीके से धंधा चलाओ, मार्जिन पे ध्यान रखो, मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट देके आप कस्टमर ला रहे हो, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं फॉर यू टू इजीली टेक ऑफ। तो हैव दैट राइट प्रोडक्ट इन माइंड, सर्विस इन माइंड, कस्टमर TG इन माइंड। निश चीज़ें अभी भी काम करेंगी, बहुत ब्यूटीफुली काम करेंगी, हमेशा रहेगी यार। हर मॉडल 10 साल में बदल जाता है टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। तो तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व की ना। कस्टमर की इतनी बुरी हालत थी कि हमारा प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली बेटर था। हाँ, एंड दैट वर्क अराउंड्स वर क्लीन, राइट? I mean that's what you need to have a strong product. If you're doing a product company, you have to solve these problems in a beautiful fashion. So we solve these problems in a beautiful fashion, हाँ, seamless fashion में, beautiful fashion में, कि भाई एक्सपीरियंस कस्टमर का ना खराब हो और ओवरऑल कन्वर्जन रेट्स मर्चेंट के बढ़ जाएं। Mobile is 40% of my transactions today, dude. Yeah, it's growing like crazy. नहीं, हर चीज़ का, हर एक का अलग है। सी, ए मोबाइल वेब इज ए डिफरेंट स्क्रीन, राइट? सो यू हैव टू ट्रीट ए टैबलेट स्क्रीन डिफरेंटली, a mobile screen differently, a mobile screen में 3-inch screen differently and a 5-inch screen differently. You know, all the screens are different. तो उसी हिसाब से आपको अपना मोबाइल पेज बनाना है when you're treating a mobile web. Information उतनी कम है, इंटरनेट स्पीड उतनी डिफरेंट है, so you have to account for all that. But it's just a different screen size if you think about mobile web. When you think about mobile app, you have to think about things in a different way. तो डिफरेंट एनिमल है, बट एक एक्सटेंशन है भाई। आप कोई भी अपना बिजनेस ले लो, एक ऑफलाइन चैनल है, एक ऑनलाइन चैनल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, सब चैनल्स है ना। वैसे ही आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है। जो भी चीज़ नया ट्रेंड आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो, उसको समझो उधर क्या चीज़ काम करेगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट निकालते जाओ। स्टे अहेड ऑफ द कर्व, स्टे अहेड ऑफ इनोवेशन। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Hey guys, if you have more questions, let's open the house for Q&A. चौथा, अगर ये बैंक्स को कल डिस्टर्ब करने लगेंगे तो बैंक्स एज इंस्टीट्यूशन